Srimad Bhagavatam ki jai. You have a name for this group? Is this got a name for some area for this group of devotees? Yeah. Anyway, it's wonderful. So many every day like this. Temple maybe 10 devotees. But we need everywhere, like I went in Bombay to Bindar Sunday night. I thought it was a home program, but they have a little temple, Jagannath, so full of devotees. And I said, where is this place, geographically? I asked him where, I don't know, geographically, where is it? He said, it's just 6 miles from Mira Road. 6 miles from? Mira Road Temple. The Binder in Bombay. You should have a temple at every station in Bombay. There's so many devotees everywhere. So same thing here. We need temples every couple miles. All right. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 This first canto, chapter 17, verse 22. स्कंद पहला अध्याय 17 श्लोक संख्या 22. Rajavacha Dharmam Bravishi Dharmagyan Dharmo Asti Asi Visharupa Drik. What happened? Did I touch the wrong thing? Okay. Yad Adharma Krita Stanam Suchakshasyapi Tadbhavet Rajavacha Dharmam Bhavishi Dharmagya Dharmosi Visharupadrik Yada Dharma Kritakstanam Suchakshasyapi Tadbhavet Rajavacha Dharmam Bhavishi Dharmagya Dharmo Si Visharupadrik Yad Adharma Kritakstanam Suchakyasyapi Tadbhavet. Okay. Others? Rajavacha Dharmo Bravishi Dharmagya Dharmo Si Visharupadrik
यदा धर्मकृतस्थानं Yad adharma kritakstanam सूचकस्यापि तद्भवेत् tag bhavet Rajavacha Dharmo bhavishi dharmasya Namosi Visharupadrik Yad Adharma Kritakstanam Sukha Chasyapi Tadbhavet Rajavacha Dharmo Bhavishi Dharmagya Padrik Yad Adharma Kritakstanam Suchasyapi Tadbhavet. Ladies, माताएं Rajavacha Dharmo Bhavishi Dharmasya Dharmosti Rupadrik Yad Adharma Kritakstanam Suchasyapi Tadbhavet Rajavacha Dharmam Bhavishi Dharmagya Dharmosi Visharupadrik Yad Adharma Kritakstanam Suchasyasyapi Tadbhavet Rajavacha. The king said, राजा ने कहा Dharmam, religion, धर्म Bhavishi, as you speak, जैसा तुम कहते हो Dharmagya, धर्म or one who knows the codes of religion. के धर्म के नियमों को जानने वाले Dharma, धर्म the personality of religion. साक्षात धर्म You are Vrisharupadrik विश्व रूप बदले in the disguise of a bull. बैल के वश में Yat, या whatever, जो भी Adharma Krita, अधर्म कहा one who acts irreligiously. अधर्म करता है Sthanam, स्थानम place. स्थान Suchakasya, सूचकस्य of the identifier. पहचान करने वाले का Api, अभी also. भी Tat, तक that. वो Bhavet, भवे becomes. हो जाता है The king said, if you, who are in the form of a bull, राजा ने कहा अहो तुम तो बैल के रूप में हो you know the truth of religion and you were speaking according to principle, तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो that the destination intended for the perpetrator of irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are no other than the personality of religion. तो मैं अनुवाद पूरा पढ़ रहा हूँ राजा ने कहा अहो तुम तो बैल के रूप में हो तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो A devotee's conclusion is that no one is directly responsible for being a benefactor or a mischief monger without the sanction of the Lord. Therefore, he does not consider anyone to be directly responsible for such action. But in both the cases, he takes it for granted
that either benefit or loss is God sent, and thus it is His grace. भक्त का निष्कर्ष यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कोई उपकारी बनने या हानि पहुंचाने वाला बनने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। अतएव भक्त किसी को ऐसे कर्म के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं मानता, किंतु वो दोनों ही किस्सों में ये मान लेता है कि हानि या लाभ ईश्वर प्रदत्त है और इस तरह ये उनकी कृपा है। In the case of benefit, no one will deny that it's God sent. But in the case of loss or reverses, one becomes doubtful about how the Lord could be so unkind to His devotee and put him in a great difficulty. Jesus Christ was seemingly put into great difficulty, being crucified by the ignorant. But He was never angry at the mischief mongers. लाभ के विषय में इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि वो ईश्वर प्रदत्त होता है, लेकिन हानि या पराजय के विषय में मनुष्य संशय करता है कि भला भगवान अपने भक्त पर इतना निष्ठुर क्यों होंगे कि उसे विपत्ति में डालें। ईसा मसीह को जब अज्ञानी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया तो वे महान विपत्ति में पड़े प्रतीत होते थे, लेकिन वे अपराधकर्ता के ऊपर कभी क्रुद्ध नहीं हुए। That is the way of accepting a thing either favorable or unfavorable. Thus, for a devotee, the identifier is equally a sinner, like the mischief monger. By God's grace, the devotee tolerates all reverses. Maharaj Parikshit observed this, and therefore he could understand that the bull was no other than the personality of religion himself. In other words, a devotee has no suffering at all, because so-called suffering is also God's grace for the devotee who sees God in everything. अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु को स्वीकार करने की यही विधि है। इस तरह भक्त के लिए अपराधी की बुराई करने वाला अपराधकर्ता के ही समान पापी है। भगवत कृपा से भक्त सभी प्रकार की विपत्तियां सहता है। महाराज परीक्षित ने इसे देखा, इसलिए वह समझ सके कि ये बैर और कोई न होकर साक्षात धर्म है। दूसरे शब्दों में भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होता, क्योंकि तथाकथित कष्ट भी भक्त के लिए भगवान की कृपा है, क्योंकि भक्त भगवान को हर वस्तु में देखता है। The cow and bull never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali, although everyone lodges such complaints before the state authorities. The extraordinary behavior of the bull made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion, for no one else could understand the finer intricacies of the codes of religion. गाय तथा बैल ने कभी राजा से ये शिकायत नहीं की कि वे कलयुग द्वारा सताए जा रहे हैं। यद्यपि राज्य अधिकारियों के समक्ष सभी लोग ऐसी शिकायतें पेश करते हैं, बैल के असाधारण आचरण से ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बैल साक्षात धर्म था, क्योंकि धर्म की बारीकियों को अन्य कोई भी इस तरह नहीं समझ सकता। Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Te Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarane Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tvishe Namaha. Hey Krishna,
Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Jayatam Sudato Pangor Mama Mandir Matergati Mat Sarvasya Padambojo Shri Shri Radha Madan Mohano Divyad Kalpadrumado Shriman Ratnagara Singhasanasto Shri Shri Radha Shila Govinda Devo Prestalibi Sevyamano Smarami Shriman Rasa Rasarambi Bamsi Vata Tatastataha Karshan Venu Sanargoti Gopinatha Shri Stunaha. We want to take the mercy of all the previous acharyas, and some of the books we get from acharyas, they have 2 pages of prayers to the previous acharya. तो पूर्ववर्ती आचार्य की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की जो प्रार्थनाएं हैं वो हमें बोलनी चाहिए. Because we're so fortunate to be connected. It's a special, amazing mercy. मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे आचार्यों से मेरा संपर्क हुआ है. We see here so many temples of everybody, you know, many temples around the city. तो हम देख रहे हैं कि शहर में बहुत सारे मंदिर हैं, अलग-अलग जगह मंदिर हैं. And many, they're just worshiping some person that they decided was God. They're just worshiping some Baba that they decided he's Bhagavan, you know, but he's not. बहुत लोग बाबाओं की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान People don't know. उनको नहीं पता भगवान कौन है. Prabhupada, you know, very clearly made everything clear. प्रभुपाद ने सब कुछ स्पष्ट बता दिया है. One time some devotees started saying Prabhupada was Krishna. एक बार एक भक्त बोलने लगे प्रभुपाद को आप कृष्णा हैं. Prabhupada was so angry. प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो गए. He said, kick them out. प्रभुपाद बोले से भाग They निकालो. were the sannyasis, the only sannyasis. And he very strongly, you know what I taught you, and you know to remember. So that won't happen, hopefully, that some time in the future they'll decide he's actually Krishna. तो और जोरदार विरोध किया प्रभुपाद जी ने. प्रभुपाद जी ने बोला कि जो मैं लिखा है वो समझो आप. क्या पता आगे जाके कोई अपने आप को कृष्ण मानेगा. इसलिए प्रभुपाद ने बहुत सख्त विरोध किया इस बात का. But saksadari tena samasta shastra. You have to honor the guru the same. But he's not Krishna, but he's representing, so you honor him. हमें गुरु का सम्मान भगवान की तरह ही करना चाहिए. हमें गुरु को पूरा आदर देना चाहिए भगवान के समान ही. लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि गुरु ही भगवान है. Prabhupada said, well, like the viceroy. In the British time, they had the king or something, and they had the viceroy. He was like the king's representative. प्रभुपाद ने कहा कि अंग्रेजों के समय वाइसरॉय हुआ करते थे, जो राजाओं की तरह प्रतिनिधित्व करते थे. So when he went somewhere, he was treated like the king. तो वो वहाँ पे गए तो उन्होंने उसे राजा की तरह सम्मान किया. And his authority was the same, but he's not the king. लेकिन वो राजा नहीं था. If he starts to think, I'm the king will throw him out, put him in the prison. लेकिन अगर वो वाइसरॉय ये समझ जाएगा कि मैं ही राजा हूँ तो राजा उस वाइसरॉय को जेल में डाल देगा. But this chapter is a very interesting and important chapter. ये जो अध्याय है ये बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है अध्याय. Where the bull doesn't want to identify, you know, the Kali who's been torturing him. जो बैल था वो कलयुग की पहचान नहीं करना चाहता था. यद्यपि वो कली उसको उस पे अत्याचार करता, फिर भी बैल बताना नहीं चाहता कि कली गलत कर रहा है. Because he knows that, you know, it's some kind of karma. You know, that when we're suffering, the person who's causing the suffering is he's not the ultimate cause. तो बैल अच्छी तरह जानता था कि अगर मेरे पे कोई कष्ट आ रहा है तो ये मेरे पूर्व कर्मों के कारण आ रहे हैं. जिससे जो मुझे कष्ट दे रहा है वो सब कुछ कष्ट का कारण नहीं है. कष्ट का कारण और ही कोई है. He's the instrument of our karma. वो खाली जो कष्ट दे रहा है वो कर्म का निमित्त है, वो असली दंड देने वाला नहीं है. So Prabhupada is mentioning, when things go nice, oh, God's grace, God is so kind to me.
right? If we get mercy, if we get rich, if we win the whatever, we think, oh, that's God's mercy. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं जब हमारे साथ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, हम धनी बनते हैं, हमारा सब कुछ अच्छा होता है, तो हम भगवान का बहुत गुणगान करते हैं, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है। But when things go wrong, then we blame someone else usually. लेकिन जब चीजें गलत होती हैं हमारे साथ तो हम किसी और को दोषी ठहराते हैं। Now we blame the government mostly. अभी हम सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं Or in ISKCON, we blame the GBC और पहले हम जीबीसी को दोषी ठहराते हैं or the temple president. या फिर They're not taking care of me properly. मंदिर के अध्यक्ष को। But advanced devotee knows better. लेकिन एक जो भक्त जिसने बहुत प्रगति कर ली वो समझ जाता है कि ये सब दोष के कारण नहीं है। But everybody, even the atheistic people in America, one time, a long time ago, one of the first space, satellites with men in it. They shoot the men up into space. So one of the first ones. तो नास्तिक लोग भी जो होते हैं जैसे अमेरिका में एक बार हुआ था कि सबसे पहले जब एक व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था So they lost it. They lost touch. The radio, nothing worked. तो वो जो व्यक्ति गया था अंतरिक्ष में उससे नीचे वाले व्यक्तियों ने संपर्क खो दिया था। So all the television in America, everybody please pray to God to help us. तो जितने भी टेलीविजन थे अमेरिका में उन्होंने ऐसी घोषणा करी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करिए भगवान से प्रार्थना करिए। And then they got it again. और फिर उनसे संपर्क वापस प्राप्त हो गया, वो व्यक्ति मिल गया। But they didn't say thank God. They just said we did it. Our technology. जब वो व्यक्ति मिल गया तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद नहीं किया, उन्होंने खुद को ही अपने आप को क्रेडिट दिया कि देखो हमें मिल गया वो व्यक्ति। When I was very young, my grandmother always watched these television, I don't know what you call them in India, soap operas, and these stupid shows that come every day, the same people. तो मैं जब छोटा था तो मेरी दादी को टीवी देखने का बहुत शौक था और टीवी में ऐसी पागल जैसी चीजें देखते हैं जो बार बार आती रहती है उस चीज को, वैसे कोई शो होते थे, कोई मतलब सीरियल होते थे जो उनको बार बार देखने का मेरी दादी को शौक था। So much of those shows, it's in the hospital. In the hospital. Somebody's in the emergency room. Very often in these shows. Whoever's in the stupid show. In the hospitals, they're always full. I went to Bhaktivedanta Hospital. People were pushing out the windows, So many people there. So that's why the TV show has so many scenes in the hospital. That's life. So then the families outside and they're all worried and in anxiety. And then the doctor will come out. And if the person died, it's in God's hands. If he lives, we save them. But either way, you have to pay. They don't say, well, he died, so it's free, It's in God did it. We didn't. It's not our fault. But actually in America, the mistakes of the doctors is the number 3 cause of death. They don't advertise that so much. So, but when the person dies, God did it. So Prabhupada gives the example of Jesus because he was preaching in the Western world. Jesus was being tortured. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ईसा मसीह का उदाहरण देते हैं कि ईसा मसीह ने पाश्चात्य जगत में प्रचार किया और इस पे लोगों ने उन पे अत्याचार किया। They were killing him in a very, very painful way. और उनको जिस तरीके से ईसा मसीह को मारा गया वो बहुत ही पीड़ाजनक था। That takes a long time.
और उसको मृत्यु में बहुत समय लगता है। But he said, forgive them, they don't know what they're doing. लेकिन फिर भी ईसा मसीह ने ऐसी प्रार्थना करी भगवान से कि इन लोगों को आप माफ कर दीजिए क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। Of course, the soldiers who were doing it, they're just ordered by जो somebody. जो सैनिक ये सैनिक कर रहे थे कार्य, वो भी उच्च अधिकारी द्वारा उनको ऐसा आदेश मिला था। So that's what the king is saying here. You know, that's what the bull is saying. We don't know for sure. Could be so many reasons. इसलिए ये बैल कह रहा है कि दुख का कारण हमें नहीं पता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। When Hanuman met Sita, जब हनुमान जी सीता को मिले थे and you know these rakshashis were harassing her, और जब वो राक्षसियां सीता जी को परेशान कर रही थी, and Hanuman got very angry. He said, "I will kill all of them." हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि मैं सभी राक्षसियों को मार दूंगा। And she said, "No, you shouldn't get angry. तो सीता मैया बोलती कि आपको ऐसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। They're just doing what Ravana told them. Otherwise, he'll kill them." वो तो वही कर रहे हैं जो रावण ने आदेश Don't दिया blame. है, अन्यथा रावण इनको मार देगा। And she said, "I tried to think why I would have this happen to me. Because in my whole life, I never did anything sinful." सीता जी ने ऐसा सीता जी ने कहा कि पूरे जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया। But she said, it must have been in my previous life I did something. लेकिन हो सकता है मेरे पूर्व जन्मों में मैंने कुछ किया होगा। So this is the proper way to think. तो यही सही तरीका है समझने का कि हमसे कोई अगर कष्ट आए तो हमें ये समझना चाहिए उसके कारण हम ही हैं। Of course, we can't get too far. Like, say you witness a murder, and and then the police ask you who was the murderer, and you say, "Well, I don't know." You have to, because otherwise he'll murder more people. You have to tell them. लेकिन हमें थोड़ा You व्यवहारिक have to बनना पड़ेगा। identify. हो सकता है कि आज की तारीख में पुलिस किसी व्यक्ति ने किसी का खून किया हो और हम जानते हैं उसको, और पुलिस अगर हमें पूछे कि किसने खून किया है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें नहीं पता, नहीं तो फिर वो हत्या करने वाले को और ज्यादा उत्साह मिलेगा और खून करेगा। In Mahabharata, Krishna told one story to Arjuna महाभारत में भगवान अर्जुन को एक कथा सुनाते हैं। later. So he said there was one simple man, and he took a vow he would always tell the truth. तो महाभारत में एक कथा है, भगवान कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को कि एक बहुत ही सरल व्यक्ति था जिसने व्रत लिया था कि जीवन में मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा। Satyam param dharma. The highest dharma is to tell the truth. उसके मन में बात है कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। Because that really means the absolute truth, to talk about Krishna. लेकिन सत्य का मतलब ये नहीं कि परम सत्य, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। So he lived in the forest. तो वो वन में रहते थे। And one day one man came running, very afraid. He was running. और एक दिन एक व्यक्ति आया भागा उनके पास। And there were several paths. He ran down one of them. There was 2 or 3 different roads, so he ran off. तो अलग-अलग रास्तों में 2-3 रास्तों में भाग रहा था। अच्छा, वो 2 रास्ते जो उसने एक रास्ते पे भागा वो। Then a gang of thieves came with knives and running after him. तो कुछ चोर डकैत जो थे उनके हाथ में चाकू था और वो उस व्यक्ति के पीछे भाग रहे थे। And they said, "Did you see this? Somebody come by here. Which way did he go?" तो उन्होंने उस सरल व्यक्ति से पूछा कि तुमने कोई व्यक्ति को भागते हुए देखा, कौन से रास्ते से भागा वो? So he said, "I have to tell the truth." So he said he went this way. तो उसने सोचा कि मैं तो सत्य बोलने का मैंने संकल्प लिया, मुझे सत्य बोलना है, तो फिर उसने बता दिया उन डाकुओं को कि वो इस रास्ते से गया है। And then they caught him and killed him. और उन्होंने पकड़ लिया उसको और उस व्यक्ति को मार दिया डाकुओं ने। So this guy that told the truth, he got also the karma for the killing. तो इस तरह से He assisted. उन्होंने सच बोला, लेकिन उसका कर्म कि उनके सच बोलने से वो व्यक्ति की मृत्यु हुई। So we have to discriminate, to some extent. तो हमें समझना चाहिए कि हमें एक विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि क्या हमारे सही करने से या सच बोलने से क्या नुकसान हो सकता है, तो हमें इस तरह की बुद्धि रखनी चाहिए। But still, we know that ultimately
it's our karma. But if someone is being used to, just abuse people, steal, and then they need to be identified so they can be put in the prison. लेकिन अंततः हमें समझना चाहिए So कोई we भी don't व्यक्ति make more trouble. कोई भी व्यक्ति जो इस तरह से अत्याचार कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उस व्यक्ति को हमें पकड़ाना चाहिए पुलिस को, नहीं तो फिर वो आगे और जाके समस्याएं पैदा कर सकता है. But everybody's in the blame, we call it in English, the blame game. क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे पे दोषारोपण करता है. You got to blame somebody for the trouble. कोई व्यक्ति हम किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं. Some people blame Shriman Modi, right? They don't like the way he कुछ लोग नरेंद्र मोदी stopped को the black money. They're suffering. Are they blaming Putin or the President of America or God? They blame somebody else. तो कुछ लोग नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को ठहराते हैं, कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट को दोषी ठहराते हैं. This is a materialistic mentality. I'm suffering. Who's the cause of it? तो भौतिकतावादी विचारधारा ऐसी है कि मुझे दुख आया है और इस दुख का कारण कौन है. I got sick, so let's find that germ and kill it. We get sick, so we think we'll find the germ and then we'll kill the germ. Then we won't be sick. Or the virus, or whatever you want to call it. अगर हम जब बीमार होते हैं और कोई जीव जंतु हमें काटता है तो हम समझते हैं वही कारण है, जीव जंतु हमारे बीमारी का कारण है. But that's not the cause of the sickness. लेकिन वो जीव जंतु हमारी बीमारी का कारण नहीं है. Janma mrityu jara vyadhi, Krishna says. भगवान गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि. It's not a new thing. ये कोई नई चीज नहीं है. There's always been birth, death, disease, and old age. तो ये सब बार-बार होता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. So the remote cause is it's our karma. लेकिन जो अंदर का कारण है वो हमारे कर्म है. If we take birth, we're going to die for sure. That's Bhagavad Gita. हमारा जन्म होता है तो हमारी मृत्यु निश्चित है. Right? What's the number one cause of death? मृत्यु का सबसे पहला कारण क्या है? They'll say, I don't know what they say in India, heart attack, or in America it's heart attack, cancer, war. No, birth. Birth is the cause of death. तो मृत्यु का कारण क्या है? कोई कह सकता है हार्ट अटैक है, कोई कह सकता है कैंसर है, लेकिन मृत्यु का कारण जन्म है. क्योंकि जन्म हुआ तो मृत्यु तो होगी. Prabhupada said, I've died 70 years, you've died 20 years. He didn't say you've lived, you've died. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं 70 साल मर चुका हूँ, तुम 20 साल मर चुके हो. तो प्रभुपाद जी ऐसा नहीं बोलते कि तुम 70 साल जी रहे हो या 30 साल जी रहे हो. It sounds pessimistic that life is just a march to death. कोई व्यक्ति इसे निराशा मार्ग समझ सकता है कि Right? जीवन तो खाली मृत्यु की तरफ अग्रसित हो रही है. Everybody's going to end up dead. हर एक व्यक्ति की मृत्यु में अंत हो जाएगा. So when in America, when we first preached like that, people, no, don't talk about that. Why do you want to talk about it? तो जब हम अमेरिका में प्रचार करते Enjoy थे, life. जब हम अमेरिका में प्रचार करते थे इस तरह से, तो लोग बोलते थे नहीं तो मृत्यु की बात मत करो, जीवन जीने की बात करो. But devotees, because they knew that, the spiritual world, they knew something beyond death, they were happy to, everyone's going to die, so let's get ready for it. लेकिन भक्त जानते हैं कि मृत्यु के आगे भी भगवान का धाम है, आध्यात्मिक लोक है, इसलिए वो लोग बड़े खुश रहते हैं कि हमें तैयारी करनी है मृत्यु की, हम भगवान के धाम जाएं. That's when Yudhishthira was asked was Yamaraj, that what is the most amazing thing in the world? तो यमराज ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, He said, ahani bhutani, ahoryad, everybody has died in the past. Everyone died and went to Yamaraj. तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि रोज हर एक व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है. Nobody can look back and say, well, my great-grandfather, he didn't die. कोई भी ऐसा Everybody died. कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे दादा या परदादा की मृत्यु नहीं हुई है. But they'd live like they're never going to die. लेकिन वो व्यक्ति ऐसे जीते हैं, हम लोग ऐसे जीते कि हमारे तो कभी मृत्यु नहीं होने वाली है. Eat, drink, and be happy. खाओ पियो और मौज करो. I saw a hotel advertising one time. It said, eat, drink, sleep.
तो होटल पे ऐसे ही विज्ञापन करते हैं कि खाओ पियो सो जाओ, highest pleasures in life. यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। This is the best place to eat, sleep, and हमारा होटल ही सबसे eat, अच्छी drink, जगह है and खाना sleep. पीना करने के लिए। And that most people, that's all they do with it. They don't know any better. They think, well, I die, it's all over. Now they say that. लोगों को नहीं पता कि क्या होने वाला है, वो सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म होने वाला है। The young people, I think in India I heard also, they say, have a saying in English, YOLO, YOLO. It means Y-O-L-O, you only live once. तो मुझे नहीं पता भारत में, लेकिन ऐसे जो जवान लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं YOL, मतलब यू ओनली लिव वंस, YOLO, YOLO, Did यू you, ओनली लिव वंस, इसका मतलब तुम खाली एक ही बार जीने वाले हो। did you learn that in school? Charvak Muni. ये चारवाक मुनि के सिद्धांत की तरह है। Enjoy life, don't worry, because there's no next life. तो चारवाक मुनि ये बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, चिंता मत करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें दूसरा जन्म नहीं है। Even in Vrindavan, I saw a hoarding for a condominium. मैंने वृंदावन में एक बोर्ड देखा होर्डिंग का, Showed a very beautiful Indian lady in a Western formal dress. तो मैंने उस बोर्ड में देखा कि एक बहुत ही सुंदर भारतीय नारी थी जिसने पश्चिमी वेशभूषा पहनी हुई थी। It said, you only live once, so get this luxury apartment now. तो वो ये विज्ञापन कर रही थी स्त्री कि तुम सिर्फ एक ही बार जीने वाले हो, तो ये लग्जरी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदो। That's in Vrindavan. और वो भी वृंदावन में। You know, it's supposed to be Tapovan, वृंदावन तो तपोवन होना चाहिए, और वहाँ पे ऐसा विज्ञापन था। a place for tapasya. वृंदावन तो तपस्या की जगह है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का विज्ञापन था। Dhruva went to Mathura to do his tapasya. ध्रुव महाराज मथुरा गए थे अपनी तपस्या करने, And Prahlad told Hiranyakashipu, you should go there. और प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकशिपु को कहते हैं आपको वन में जाना चाहिए। But now, for a while, now I may be down, but everywhere was the ads for luxury apartments. तो हम देखते हैं आजकल कि हर जगह ये होर्डिंग लगी रहती है, लग्जरी बिल्डिंग है, Luxury furniture, luxury clothes, हर everything. एक चीज, बहुत अच्छे फर्नीचर, बहुत अच्छे कपड़े। But Bhagavatam says that luxury is very detrimental for spiritual life. लेकिन भागवत कहते हैं कि आरामदायक सुविधाजनक ऐशो आराम वाला जीवन है, वो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा है। Comfort is all right, so you can chant peacefully, but, you know, anyway, it's crazy world. So हम सोचते हैं कि सुख सुविधा बहुत अच्छी है तो हम अच्छी तरह रह सकते हैं, लेकिन ये दुनिया के लोग और ये दुनिया पागल है। I was going for the Vrajmandala Parikama one year. The first day is in Mathura, you know. हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में गए थे, तो पहले दिन मथुरा में थे। So Bhadra Prabhu, who is an organizer, leader, तो उस यात्रा के जो लीडर थे वो भद्र प्रभु थे। that night there was huge rain and they had to move everybody and all the tents were flooded. तो उस दिन रात को बहुत ही घनघोर वर्षा हुई, और हमने जहाँ भी अपने तंबू लगा के थे हमें सब जगह बदलनी पड़ी। And he was thinking, why did I come here? I have a nice room in Vrindavan. I could have stayed there. तो लीडर, He was thinking like that. तो वो जो भद्र He had to stay up all night, you know. तो भद्र प्रभु Fighting. पूरी रात जगना पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि मैं फालतू में यहाँ आ गया, अच्छा खासा मेरा वृंदावन में रूम था। Then the next day we were walking and one old man came and he said, Vrindavan, Mathura, this is Tapovan. तो हम जब अगले दिन सुबह चल रहे थे तो एक भद्र व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि वृंदावन तो तपोवन है। Then he thought, okay, that's right, you know. तो तब उन्होंने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, You get benefit by that. यहाँ पे रहने से, यहाँ पे तपस्या करने से हमें लाभ मिलता है। But just living in a material body, it's tapasya. It's not so much trouble. और ये बात भी सही है कि भौतिक शरीर में रहना भी एक तपस्या ही है। Oh, it's, you know, I mean, it must be everywhere. There's so many advertisements for painkillers and curing this and curing that, you know. तो हम देखते हैं Hospitals everywhere. अलग जगह हम विज्ञापन देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि कुछ दवाइयाँ हैं सही करने की, दर्द सही करने की, अलग अलग अस्पतालों के हम विज्ञापन देखते हैं। Right, diagnostic clinic, pharmacy, hospital. दवाइयों की कंपनी के, अस्पतालों के, क्लिनिकों के।
So people are suffering. इसका मतलब ये हुआ कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग पीड़ा प्राप्त कर रहे But हैं। they're so stupid, they say, it's okay, we have hospitals. लेकिन लोग इतने बुद्धू हैं कि वो समझते हैं कि मैं अगर परेशान हूँ तो क्या हो गया, अस्पताल तो है ना इलाज के लिए। The only reason we have a hospital is because people are sick. The only reason there's a hospital is because everybody gets sick all the time. If nobody got sick, like we don't read in the Krishna book about hospitals, हम कृष्ण बुक में doctors, हम कृष्ण बुक में अस्पताल और डॉक्टरों के बारे में नहीं पढ़ते हैं। or in Ram Raj and Ayodhya, nobody got sick. राम राज्य अयोध्या में भी कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता था। They didn't die unless they wanted to. यहाँ तक कि अगर वो नहीं चाहते थे तो उनकी मृत्यु भी नहीं होती थी राम राज्य में। But now you go to any hospital and there's so many people waiting. लेकिन अब हम कोई भी अस्पताल में जाते हैं तो कितने लोग वेटिंग में लगे रहते हैं अस्पताल में, Anywhere in the world, हर एक जगह पूरी दुनिया में। so-called advanced country, that in a bigger hospital maybe. तथाकथित हम समझते हैं तथाकथित प्रगति है देशों की, लेकिन जितने बड़े प्रगतिशील देश हैं इतने बड़े बड़े अस्पताल होते हैं। But this is tapasya to live in this body. Always something wrong, some pain, somebody giving us a headache, economy, whatever is happening. तो इस शरीर में रहना भी बहुत बड़ी तपस्या है। हमें बहुत बार कष्ट आते हैं, बार बार परेशानी आती है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, ये सब चीज इसी कारण से हो रही है क्योंकि हम इस शरीर में रह रहे हैं। तो शरीर में रहना भी बहुत बड़ी तपस्या है। So we're very fortunate that we have been given this knowledge, that we're not the body. तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हम ये शरीर नहीं हैं। And we can use this body to serve Krishna. और हम इस शरीर का सदुपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में करने के लिए लगा सकते हैं। It's not very difficult. वो इतना मुश्किल नहीं है। Krishna says it's joyful and easy to perform. और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि भक्ति बड़ी आनंदमय है और सरलता से हम कर सकते हैं। And Lord Chaitanya showed us how to do it. और उन्होंने हमें बताया कैसे करना है। Right? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now all over the world, people are dancing and chanting and going back to Godhead. तो पूरी दुनिया में आज लोग सब संकीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और भगवान के धाम जा रहे हैं। It's a simple process, but follow the regulated principles. लेकिन ये बहुत ही सरल विधि है, लेकिन साथ साथ में कुछ नियम भी हैं। Lord Chaitanya, Nityananda, and then Prabhupada, especially merciful. तो भगवान जी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और विशेष रूप से श्री प्रभुपाद सभी लोग बहुत ही करुणामय हैं। Previous ages, it's very difficult to. पूर्व जीवन में, पूर्व वैदिक काल में बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। But here, in this Kali Yuga, if we just regularly chant the holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, so we need many of these Hare Krishna satsang halls. We need many. तो कलयुग में बहुत ही आसान हो गया, हमें खाली हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है और इसलिए आज की तारीख में हमें सत्संग केंद्रों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। Lord Chaitanya, he said, Yare deke, tare deke, Krishna upadesh, amara gaya guru hoy, tare desh. Wherever you go and whoever you meet, tell them about Krishna. तो भगवान चैतन्य ने बोला है कि आप जिससे भी मिलो, जहाँ भी जाओ, खाली कृष्ण के बारे में बात करो। You become a guru and save your land. और आप गुरु हो, लोगों का उद्धार करो। That's for everybody. वो सबके लिए ये आदेश है। I just heard Prabhupada lecture, and he was saying, you can be the guru of your neighborhood. Just, a few people around. प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर आप गुरु बनना चाहो तो अपने पड़ोसियों के भी गुरु बन सकते हो, आपके आसपास के लोगों को भी आप प्रचार कर सकते हो। Be the guru of your house. आप अपने परिवार के गुरु बन सकते हो। Right? You have wife, children. आपकी पत्नी, बच्चे You're हैं। the guru. Everyone. And whoever you meet, if you tell them about Krishna, even if you just have tilak, people think of Krishna. तो आप किसी को भी मिलो, कृष्ण के बारे में बात करो, अगर आपके चेहरे पे तिलक भी होगा तो लोग कृष्ण के बारे में सोचेंगे। We were in Thane. Is it Thane? Thana? Yeah. So the devotee who's in charge there, he works at the airport. He has a big job.
मैं थाने में गया था मुंबई के पास, तो एक मृदंग लेके गए थे and he came home from work, a big tilak. और बहुत बड़ा तिलक लगा के आए थे। I said, wow, you can wear that tilak at work? He said, yeah, I got permission, because it's a religious thing or something. And so he goes to the work with the big tilak. वहाँ एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, वहाँ तिलक लगा, मतलब मुझे परमिशन मिला। तो वो एयरपोर्ट पे नौकरी करते थे, उन्होंने तिलक लगाया, तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे अनुमति मिली तिलक लगाने की। There's one couple in London, they're both doctors. They have their own clinic. तो एक शादीशुदा जोड़ा है लंदन में, दोनों डॉक्टर हैं, उनकी खुद की एक क्लिनिक है They always wear tilak. और वो दोनों पति पत्नी हमेशा तिलक लगाते हैं। Then people say, what is that? और लोग कहते हैं कि ये क्या है, And then they tell them. और वो फिर इसके बारे में बताते हैं। Now the young people put the tattoo pictures of आजकल Hanuman. जवान लोग भी टैटू लगाते हैं शरीर पे। I was mixed up about the tattoos, if it's bona fide, तो मुझे ऐसा लगता था कि टैटू जो है ये प्रामाणिक है या नहीं है। So I was at one house in America, and the girl, she had a Mahamantra here in Sanskrit, तो मैं घर में गया अमेरिका में, तो quite big. उनके हाथ में महामंत्र संस्कृत में टैटू किया हुआ था हाथ पे। In America, they might not let you wear the tilak to work. अमेरिका They won't let you wear tilak, maybe. अमेरिका में हो सकता है कि अगर हम तिलक लगाए तो No लोग religion. She's school teacher. So she said, yeah, everybody asked her, what is that? तो वो जो महिला है अमेरिका में, वो स्कूल टीचर है, वो हाथ पे उन्होंने महामंत्र का टैटू किया हुआ है, तो सब लोग पूछते हैं ये क्या है। Because it's good, it's very attractive. तो दिखता है सामने Then she सामने। tells him, Hare Krishna. तो फिर वो महिला सबको बताती कि हरे कृष्णा है। So it's a way to introduce people. तो ये भी एक तरीका है लोगों को प्रचार करने का, कृष्ण के बारे में बताने का। Then her husband came home. फिर उस स्त्री के पति घर पे आ गए। He has the big muscles. And he had a big Hanuman over here and something else over here, तो वो जो उनके पति थे वो बहुत ही पहलवान टाइप के व्यक्ति थे, बड़े बड़े उनके मांसपेशियां थी, तो उन्होंने भी हाथ पे बड़े बड़े टैटू लगा रखे थे। हनुमान। But he said the same thing. People say, well, what is that? तो लोगों ने उनसे भी पूछा ये क्या है हाथ पे? Because most tattoos are really ugly, but the devotee tattoos are very beautiful. क्योंकि ज्यादातर लोग जो दूसरे टैटू लगाते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, खराब लगते हैं, लेकिन जो भक्तों के टैटू होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। And the pictures of Krishna, that's why Prabhupada put in the book so many pictures. क्योंकि उन टैटूज में भगवान कृष्ण के चित्र होते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने अपनी कितनी सारी पुस्तकों में भगवान कृष्ण के चित्र अंकित किए हैं। So that's preaching, तो ये भी प्रचार करने का एक तरीका है। Some way or other, we want to give people Krishna. Prasadam, books, or the holy name. तो ये ना प्रकार है ना, कोई तरीके से हमें लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में बताना है, या तो प्रसादन के द्वारा, या नाम के द्वारा, या ग्रंथों के वितरण के द्वारा। Ideally, we give all at the same time, लेकिन हमें देना चाहिए। But at least one of them, the holy name, and the book, the prasadam. कोई एक व्यक्ति को तो हमें देना चाहिए, भगवान का नाम, प्रसाद और भगवान के ग्रंथ। And all over the world, devotees are out chanting Nagar Sankirtan. और धीरे-धीरे पूरी दुनिया में लोग जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। Last Sunday, they went in Juhu Beach. They said 500 devotees. They went for dancing on the beach. तो संडे रविवार के दिन जुहू बीच पे करीबन 500 भक्त लोग जुहू बीच पे गए और कीर्तन कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे बीच पे। So the people were really, wow, they never saw so many Hare Krishna. तो जो बीच में अन्य लोग थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने सारे होलसेल में भक्त कहाँ से आ So गए। they danced and chant also. तो वो लोग जुड़ गए इनके साथ और कीर्तन और नृत्य करने लग गए। Lord Chaitanya traveled in South India by himself. भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत अकेले गए थे, खुद गए थे। In every temple he went to, he would dance and chant for hours. और हर एक मंदिर जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जाते थे, वहाँ पे दर्शन करते करते हमेशा घंटों तक नृत्य करते थे और कीर्तन करते थे। And other people would start to chant and chant. और दूसरे लोग देख के उनको भी शक्ति मिलती थी। And they went back to their village, and other people started dancing and chanting. और
जो लोग चैतन्य महाप्रभु को देखते थे उनको शक्ति मिलती थी और फिर वो अपने गांव में जाते थे तो वो के उस गांव के लोग भी भक्त बन जाते थे। Prabhupada did the same thing. He went to America alone. प्रभुपाद जी ने भी वही कार्य किया, वो अमेरिका अकेले गए, He had only kartal. उनके पास खाली करताल थे, Didn't have mridanga, मृदंग भी नहीं था उनके पास, didn't have harmonium, ना ही हारमोनियम था, he didn't have amplifier. ना ही उनके पास एम्पलीफायर था, Just one old man with the kartal. खाली एक वृद्ध व्यक्ति करताल के साथ। And he just started chanting, but then other people joined him, and now और million, उन्होंने कीर्तन शुरू किया और कितने लोगों ने जोड़ दिया और हम आज देख सकते हैं। millions of people. So that anybody that, it'll spread. So that's it. Wherever you go and whoever you meet, tell them about Krishna, something about Krishna. तो इसलिए हमें भी यही सिद्धांत को समझना है कि कहीं भी हम जाएं अकेले हों, लेकिन हमें कृष्ण के बारे में चर्चा करना है जिससे भी हम मिलते हैं। I don't know if you heard the scores, they just had this Srimad Bhagavatam set Bhadra campaign. तो अभी आप लोगों को पता होगा कि भद्र पूर्णिमा का कैंप हुआ था, उसमें श्रीमद् भागवतम के सेटों का वितरण हुआ था। Total in the world was 44,000. पूरी दुनिया में 44,000 श्रीमद् भागवतम के सेट का वितरण हुआ था India was 32,000. और खाली भारत में 32,594 भागवतम सेट का वितरण हुआ था। 80%. 80% तो खाली भारत में हुआ था वितरण। And Mayapur did 9,000. और सिर्फ मायापुर में ही 9,000 भागवतम सेट का वितरण हुआ था। So those are big numbers, but when you think of how many people there are, it's not very much. तो ये बहुत ही बड़ी संख्या है, लेकिन जब हम देखेंगे कितने लोग पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो इतनी बड़ी संख्या नहीं हो। In India, 32,000, but Surat has 7 million people. पूरे भारत में 32,000 भागवतम सेट का वितरण हुआ, लेकिन सिर्फ सूरत में ही 70 लाख लोग हैं। So to keep going. Surat is a special place. इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि 32,000 सेट तो बहुत हो गए, सूरत की आबादी 70 लाख है, इसलिए सूरत में भी हमें भागवतम सेट का वितरण करता रहना चाहिए और सूरत एक बहुत ही विशेष स्थान है। I never got so many garlands. मुझे सूरत के अलावा और कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ इतनी मालाएं मिली है मुझे। And when Prabhupada came to Surat with the devotees जब प्रभुपाद सूरत में आए from थे, America, from England and America, they had been going around India and people greeted, but in Surat, you see the pictures, they were going in Harinam and everybody was like this, all the 50 devotees. तो प्रभुपाद जी जब सूरत में आए थे 1971 में, तो इंग्लैंड और अमेरिका से अपने 50 भक्तों को लेके सूरत आए थे। They never, तो जब सूरत में उन्होंने कीर्तन करते थे भक्त लोग, तो हर एक भक्त 50 भक्तों के हर एक भक्त के गले में इतनी सारी मालाएं होती थी। and the devotee who was hosting them, he was giving them so much feasting all the time. और जो व्यक्ति ने, जो भक्त ने उन सबको ठहराया था, उन्होंने खूब आदर सत्कार कर खूब अच्छा स्वादिष्ट भोजन खिलाया। And taking care of them like, because they get sick a lot. और उनका बहुत ध्यान रखते थे सभी भक्तों का। And not only that, but he would arrange where they would go for chanting. और वो लोग सब व्यवस्था करते थे कि इनको कहाँ जाना है, कीर्तन करने के लिए कौन सी जगह जाना है। Then he would put in the newspaper, these Hare Krishnas will be at such and such. और फिर वो अखबार में छपवाते थे कि ये हरे कृष्णा वाले यहाँ Prabhupada was with it. And the people would be in their windows throwing flowers. And तो जब वो कीर्तन करते थे भक्त लोग सूरत में, तो लोग खिड़कियों पे खड़े हो जाते थे, ऊपर से देखते थे और ऊपर से फूल फेंकते थे। so Surat got special mercy. इसलिए सूरत को विशेष कृपा प्राप्त हुई है It's still like that. और अभी भी मिल रही है। But we want to reach everybody, so everybody has to preach. इसलिए सूरत में हमें हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना है, इसलिए हमें हर एक व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, One way or another, that's all. एक तरीके से दूसरे तरीके से। And so many devotees are doing that all over the world, in India especially, though. So many devotees are. Some Maharajis on the internet, they have 200,000 followers. इन इंडिया Yeah, one Maharaji, I forget her name. She has 200,000 followers. इसको Yeah, तो भारत में महाराज कह रहे हैं कि खाली भारत में ही 2 लाख इस्कॉन के अनुयायी हैं।
There's another young girl named Goramani. एक The लड़की singing. है जिसका नाम है गौरमणि और बहुत अच्छा कीर्तन करती है। Actually, her whole family, they go and travel around and make kirtan. उनका पूरा परिवार जो है वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और कीर्तन करते हैं। And she gives Bhagavad Gita classes on the internet. और वो गौरमणि जो है वो भगवद गीता पे प्रवचन भी करती है। She has 2 million followers. और ऑनलाइन Yeah, और ऑनलाइन में उनके 20 more than लाख Gaur Gopal, 20 लाख फॉलोअर हैं। more than Amoga. But this is what's happening. So everybody should be doing something. We might get 1 follower, we might not get any, but Krishna knows. We're trying to show people, give people the holy name. तो महाराज ने बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि उनके 20 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमारे तो कोई नहीं है। हमारे हर एक को कुछ ना कुछ एक फॉलोअर मिले, 2 मिले, कुछ भी नहीं मिले, तो उसे प्रचार हर एक को करना चाहिए। So we're very fortunate to have this really nice facility here. तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग देख रहे हैं। I went to the Vesu the other day. I think it's Vesu, Vasu, something. Another new temple starting. हाँ वेसु वेसु। Yeah, also like this, so many devotees. तो मैं वेसु में भी गया था और प्रचार के लिए वहाँ भी काफी भक्त थे। It's a little far away, but all around they're building big towers. हाँ वो थोड़ा मंदिर दूर है, लेकिन आसपास बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें हैं। I hope somebody moves in those towers. In China, they built so many towers that they're empty. Now they're knocking them down. चाइना They built so many skyscraper apartment buildings, but nobody came. There's not enough people. कोई आए No, but they're empty. चाइना में भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची-ऊंची इमारतें हैं, लेकिन अभी तक कोई रहने के लिए आया नहीं है। In Vrindavan, there's so many. वृंदावन में भी बहुत काफी ऐसी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, Many empty. लेकिन बहुत सारी खाली हैं। The apartment is sold, but nobody stays there. बहुत सारे बिल्डिंगें टिक चुकी है, बुक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रहने के लिए नहीं आया है। But Vrindavan is Tapovan. We should go there for chanting the holy name. और वृंदावन लेकिन तपोवन है भक्तों के लिए, और भक्तों को वहां जाके हरि नाम का जप करना चाहिए। Now many people be going for Kartik. अभी कार्तिक यात्रा में, कार्तिक महीने में काफी भक्त लोग वृंदावन जाएंगे, So it's for hearing and chanting, और वो यात्रा विशेष रूप से हमारी खाली श्रवण के लिए और कीर्तन के लिए होनी चाहिए, not for going to Govindas. लेकिन सिर्फ गोविंदा जाने के लिए नहीं होनी चाहिए। For hearing and chanting. खाली सुनना चाहिए, श्रवण कीर्तन चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, Because we get more benefit, but you take a holiday. For a devotee, holiday means you chant more, you read more. तो अगर हम वृंदावन में जाके ऐसे करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा, और यही हमारी असली छुट्टी है। भक्तों के लिए छुट्टी होती है, तो भक्त लोग छुट्टी का जो सदुपयोग करते हैं, ज्यादा श्रवण करके और कीर्तन करके करते हैं। But we don't have to go to Vrindavan, and not only Kartik, we want to chant every day. लेकिन हमें खाली कार्तिक में जब भी श्रवण कीर्तन वृंदावन में नहीं करना, हमें रोज करना चाहिए। Nityam Bhagavata Sevaya. नित्यम भागवत सेवया। It's supposed to be all the time, but Krishna is very merciful. So if you do every day regular, then एक्चुअली होना तो हमें पूरे टाइम ही भागवत पढ़ना चाहिए, लेकिन भगवान बहुत कृपावान है, इसलिए कम से कम हमें रोज तो पढ़ना ही चाहिए, till we can get to 24 hours. 24 घंटों में। But every day, 16 rounds, every day something. तो हमें रोज 16 माला करनी चाहिए, रोज कुछ ना कुछ भागवतम पढ़ना चाहिए। So thank you very much. It's very nice to see so many devotees coming for Bhagavatam class every morning. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने लोग भागवतम क्लास का श्रवण करने के लिए सुबह सुबह आए हैं, And this is going on all over the world, actually. और इस तरह की भागवतम कक्षाएं पूरी दुनिया में हर जगह होती रहती हैं। Devotees get very determined, भक्त लोग बड़े दृढ़ संकल्पी हैं। In Russia, one devotee was asking me, he said they have Mangal Arati, and some devotees drive 100 miles. रशिया के एक भक्त ने मुझे बताया कि हम लोग मंगल आरती रखते हैं, और मंगल आरती अटेंड करने के लिए कुछ भक्त तो 100 मील दूर से आते हैं। I think they should start having Mangal Arati in more places. तो वो लोग अलग अलग जगह पे मंगल आरती शुरू कर सकते हैं। But
But sometimes devotees live right next to the temple, but they never go. लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि भक्त बिल्कुल मंदिर के पास रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। They say the person who lives next to the station, he misses the train. तो ये तो वही वाली बात हो गई, कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन के पास ही रहता है फिर भी उसकी ट्रेन छूट जाती है। You think, I have lots of time, no problem. It's only close, And then he waits too long, and he gets there, and the train is going. वो व्यक्ति दूसरी चीजों में कपड़े वपड़े खरीदने में लग जाता है और इस तरह से टाइम खराब करता है, उसकी ट्रेन चली जाती है। So we might think, well, I can go to the temple tomorrow. तो हम ये सोच सकते हैं कि मैं तो मंदिर आज नहीं जाऊंगा, कल That's जाऊंगा। true, but if you think that every day, you never get there. लेकिन अगर आप रोज ही ऐसा सोचोगे कि मैं कल मंदिर जाऊंगा तो फिर तो मंदिर जा ही नहीं पाओगे। They say the best time to plant a tree was 15 years ago. सबसे सही समय पेड़ को बीज डालने का है वो 15 साल पहले का है। Because then you'd have fruit now. क्योंकि उसके फल अब मिलेंगे हमें। But if you didn't do that, now is a good time. लेकिन अगर हम उस टाइम 15 साल पहले पेड़ नहीं उगा पाए तो अब तो उगा लें कम से कम। So the best time to surrender to Krishna was a long time ago, but do it now. तो इसी तरह से भगवान कृष्ण को शरणागति का सबसे अच्छा टाइम तो बहुत पहले ही हो चुका था कि अगर हम उस टाइम चुक गए तो कम से कम अब तो हो जाए। And don't be worried. Sarva dharma prityaja mame kam sharanam aham tvam sarva papi. I'll protect you, just don't worry. कृष्ण कहते कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप डरो मत। Okay, thank you again. Dhanyavad. Any comments or questions are welcome. तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। I recommend reading this chapter a few times. It's a very interesting मैं chapter. आप लोगों को सलाह दे सकता हूँ कि जो ये 17वां अध्याय है ये बार बार पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। This chapter and the one with Ashwatthama, and Krishna told Arjuna to kill him. They're trying to decide what to do. तो ये वाला अध्याय और एक और अध्याय है जिसमें अश्वत्थामा को पांडव पकड़ लेते हैं और कृष्ण बोलते हैं कि इसे मार दो। तो वो चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वो भी आप बार बार पढ़ सकते हैं। So the Bhagavatam is teaching us everything, how to live, तो भागवतम हमें हर चीज सिखाती है, how to do everything. क्या क्या हमें कैसे करना चाहिए, हर चीज हम भक्तों को भागवत से शिक्षा मिल सकती है। And we read it, and then automatically we'll get closer to Krishna. और जैसे हम भागवत को पढ़ेंगे तो अपने आप ही हम भगवान कृष्ण के नजदीक पहुंच जाएंगे। Chant the holy name, then you're always associating with Krishna. और भगवान के पवित्र नामों का जप करने से भी हम कृष्ण के संपर्क में हमेशा रहेंगे। Okay, so any question or comment? कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Sorry, I don't speak Gujarati or. मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं गुजराती नहीं बोल पाता हूँ। Sometimes I think I can't even speak English. कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इंग्लिश भी नहीं बोल पाता हूँ। Because the translators get confused. और इसलिए जो मेरी लेक्चर अनुवाद करते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। But and language is tricky anyway. Language is very tricky. तो जो भाषा है वो बहुत ही चालाक होती है। Because even people speaking the same language, sometimes they don't know at all what the other person is thinking. इसलिए कभी-कभी व्यक्ति कोई भाषा में बोलते हैं लेकिन वो क्या बोल रहा है हम नहीं समझ पाते हैं। Because the words have many meanings. क्योंकि शब्दों के अलग-अलग अर्थ होते हैं। But ultimately, they all mean Krishna, devotional अंततः service. सभी का अर्थ भगवान के लिए है, भगवानी। Bhakti mam abhijanati. Then one who constantly endeavors tesham satyati yuktana. Krishna gives knowledge. जो भगवान की भक्ति हमेशा करता रहते हैं उनको भगवान ज्ञान देते हैं। Trying to serve Krishna, he'll be appreciated. अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। Only by mercy. Always the mercy has to be there. और हमें इस तरह से कृपा प्राप्त होगी।
So we're very lucky. Nityananda has unlimited mercy, and Prabhupada also more mercy. तो हम बहुत सौभाग्यवान है कि नित्यानंद प्रभु के पास असीमित कृपा है और प्रभुपाद जी के पास भी असीमित कृपा है। All right, Hari Bol, हरि बोल। mercy. कोई नहीं प्रश्न जो पास में रहते हैं उसकी नींद छूट जाती है दूर दूर तो उसके लिए क्या करना चाहिए फोन नहीं छूटे कि मान कर नींद छूट जाती है दूर तो उसकी भी छूट जाती है तो नहीं छूटे इसके क्या उपाय है महाराज तो प्रभु जी का प्रश्न है, पहले मैं हिंदी में बता देता हूँ। प्रभु जी कह रहे हैं कि जो पास में रहते हैं रेलवे स्टेशन के उनकी ट्रेन छूट जाती है और जो दूर में रहते हैं उनकी भी ट्रेन छूट जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है। ट्रेन पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? महाराज he's asking one question. There is one who is living near the railway station. One who is living near the railway station. He misses the train. I couldn't hear what you said. One man who is living near the railway station, he is missing the train. He's what? Missing the train. Train. He is missing the train. Yeah. And one man who is living very far from the railway station, he is also missing the train. So what we should do so that the train doesn't get missed? Well, sometimes people that live far away, they'll leave really early, you know. तो जो लोग दूर रहते हैं वो बहुत जल्दी चले जाते हैं स्टेशन के लिए। So if we think, well, it's so easy to get Krishna, I'll just do it tomorrow, you know. इसलिए इसका मतलब ये हो गया अगर हम ये सोचें कि कृष्ण को प्राप्त करना बहुत सरल है, इसलिए हम कल करेंगे। So for ourselves and for everybody, we have to pray. And main thing is, you know, we make festivals, we make Rath Yatra, we make temples where people can easily come. Because if they even just bow down to the deity, they get so much benefit. तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, और हम भक्त लोग इतने रथ यात्रा करते हैं, इतने उत्सव करते हैं, इतने मंदिर करते हैं, जिससे कि दूसरे लोग आए भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि भगवान को प्रणाम करने से असीमित कृपा मिलती है। Then, you know, we have prasadam. Say like go to Juhu, you know, there's always kirtan in the temple. प्रसाद बांटना, प्रसाद वितरण करना, कीर्तन करना, And everybody's getting prasadam. हर एक को प्रसाद प्राप्त होना चाहिए। So many books. So that's what temple's for. It's easy for people to come. मंदिर है ही उसके लिए कि प्रसादों का वितरण होना चाहिए, ग्रंथों का वितरण होना चाहिए, जहाँ पे सरलता से लोग आते हैं मंदिर में। Rath Yatra, of course, I can't, he told me how many people watch the Rath Yatra in Surat. So many millions of people, right? तो रथ यात्रा में सूरत में कितने लोगों ने सूरत में आए थे रथ यात्रा के दर्शन करने, लाखों लोग आए थे। You have to bring Krishna to them because हमें भक्तों को कृष्ण लोगों के पास पहुंचाना पड़ेगा। they've heard all this nonsense Mayavadi, you know. जो मायावादी होते हैं वो सब बकवास करते हैं। God is everywhere, you don't have to go to the temple. तो मायावादी ये कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है? Right? Prabhupada said, if he's everywhere, then he's in the temple also. प्रभुपाद जी मायावादियों को इसके सामने बोलते रहे कि अगर भगवान सब जगह है तो फिर वो मंदिर में भी तो होने चाहिए। But the temple's different. लेकिन मंदिर अलग जगह है। Just like you may see some, I don't know names of people now, Amitabh Bachchan or something, in the movie. तो हम देख सकते हैं कि कोई बहुत ही विशेष अमिताभ बच्चन जैसा कोई हीरो है जिसको हम पिक्चर में देखते हैं, You may see him on television. हम टीवी में देखते हैं। But if you could go to his house and have dinner with him, that's better, right? लेकिन अगर फिर भी आप उसको टीवी में देखते हो, पिक्चर में देखते हो, लेकिन अगर आपको मौका मिले अमिताभ बच्चन के घर जाने का और उसके साथ भोजन करने का, तो थोड़ा उससे अच्छा है, खाली टीवी में देखने से अच्छा है। You can watch the cricket game on television. आप क्रिकेट टीवी पे भी देख सकते हो क्रिकेट मैच। But people will pay so much money to go
to another country even to see the लेकिन cricket लोग game. लेकिन लोग कितना पैसा चुकाते हैं दूसरे देश The में people जाने के watching लिए, on television, they see the same thing, दूसरे देश में जाने के लिए, but it's not the same. लाइव देखने के लिए पैसा Live देते is better, right? So the temple is Krishna live. It's there. हैं। उसी तरह से भगवान जो कृष्ण का Different. मंदिर है वो कृष्ण का लाइव जगह है। So we have to teach people, make it available. That's all. इस तरह से हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए। Just keep making it available, and the world will get purified. Keep chanting. इसी तरह से हमें भगवान कृष्ण को सबके लिए बिल्कुल आसान कर देना चाहिए जिससे पूरी दुनिया शुद्ध हो जाएगी। If you're just chanting in your house, it's still purifying a big area all around. खाली आप अपने घर में जप करते रहोगे तो पूरे विस्तार का कल्याण नहीं होगा खाली घर में जप करने से। So many devotees are worshiping Shalagram in their house and deities, and that's purifying the whole all around a lot. तो कोई भक्त शालिग्राम की सेवा करते हैं घर में और भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं तो उससे पूरा जो एरिया है वो शुद्ध हो जाता है। And now, with the internet, it's spreading much more. और अभी इंटरनेट के द्वारा और ज्यादा प्रचार विस्तार हो रहा है। So that's what we do, and we pray for everybody. इसलिए हमें भक्तों को सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Human life is a very special opportunity. मनुष्य जीवन एक बहुत ही विशेष अवसर है। But it's not meant just for skyscraper buildings. खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने के लिए मनुष्य जीवन को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। You can look on the internet. When I go to Africa, I saw these ants, this little. They build skyscrapers, really big ones, like 3 or 4 meters high. तो मैं अफ्रीका गया तो मैंने देखा अफ्रीका में चींटियां ने भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई 3-4 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाई। They're very small. इतनी छोटी छोटी चींटियां हैं। And inside they're underground also big. और वो जमीन के अंदर भी बहुत गहरी छेद कर देते हैं चींटियां। And it's very organized inside with so many storage rooms and places, and so the humans, they think they're very special, but the ants are doing the same thing. तो चींटियां भी ये कर सकती है तो अगर हम मनुष्य खाली इसी काम में लगे रहेंगे तो हम उसमें क्या विशेष किया है हमने क्या हमने कोई चींटियों से ज्यादा कोई विशेष काम किया है। Human life is for spiritual advance. मनुष्य जीवन एकमात्र परमार्थिक आध्यात्मिक कल्याण के लिए है। Whether you live in a skyscraper or you live in a hut, I saw many on the road coming here. या तो आप बिल्डिंग में रहो या कहीं दूसरी जगह रहो। In India, we see the extreme. Other countries, they hide it more, The really poor people are in some place and you don't see them. The rich people are in another place. तो भारत में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक भेद है कि छोटे लोग गरीब लोग एक बिल्कुल अलग जगह में रहते हैं और बड़े धनी लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में एक अलग विस्तार होता है। But birth, death, disease, and old age is everywhere. लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो निर्धन को भी है और धनी को भी है। So if you really want to live, chant Hare Krishna. अगर हम सब कुछ जीना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। So we give books everywhere. Not everybody reads them, but they still benefit. हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पुस्तकों का वितरण करें तो कोई लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अगर हम उनको वितरण भी करें तो उनका लाभ होगा। But it's much better if they read them. लेकिन उससे कहीं ज्यादा लाभ ये भी होगा कि हमें देखें कि वो पढ़ेगी। So now devotees are making Bhagavad Gita reading programs all over. It's so many things we're doing. तो भक्त लोग अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं गीता का रीडिंग कोर्स निकाल रहे हैं और अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। With the internet, and the WhatsApp or whatever, there's so many different ways now. Devotees get together and just read Bhagavatam. But they live in different parts of the world even. इंटरनेट के द्वारा भी लोग अलग अलग जगह मिलते हैं भागवत पढ़ते हैं और इस तरह से इंटरनेट के द्वारा प्रचार करते हैं। They can't, going to the temple is not so easy. If you live here, going to the temple is not easy. तो अगर हम यहाँ रहते हैं और मंदिर जाना जो मंदिर दूर है वो इतना सरल नहीं है आसान नहीं है। Unless you have a police motorcycle or something. And then you can, get out of your way. Otherwise, it takes a long time.
अगर आपके पास पुलिस की मोटरसाइकिल हो तो आप एक झटके में पहुंच सकते हो कि वो आवाज करते करते निकल जाओगे, लेकिन अगर सामान्य मोटरसाइकिल हो तो टाइम लगेगा मंदिर पहुंचने So fortunately, you have this temple and then more temples, more temples. में। इसलिए हमें अलग अलग जगह और मंदिरों की स्थापना करनी चाहिए Make it available. और कृष्ण को हर जगह उपस्थित करना चाहिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So let's stand up and have a dance. हरे कृष्णा Stand up and chant and dance for a few minutes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.